a story of dreams, determination, discipline, and dedication. Our school is not just a building made of bricks, it is a temple of learning where young minds are shaped, values are nurtured, and futures are built. From tiny steps in kindergarten to confident strides towards success, every corridor echoes with hard work, laughter, and growth. Today, we invite you to witness a glimpse of this beautiful journey. Let us take you through the inspiring story of our institution, its vision, its achievement, its people, and its pride. So, ladies and gentlemen, kindly direct your attention to the screen for the documentary presentation. And now, to elevate this evening with wisdom and grace, we move towards welcoming our distinguished dignitaries to the dais. To escort our esteemed guests to the stage, I request Subham and Trishna to kindly accompany each dignitary with respect and honor. Let us welcome them with a big round of applause. With immense pride and deep respect, I invite our honorable chief guest, Sri Himanshu Bhushan Samarth Sir, Joint Director of Odisha School Education Program Authority, a visionary leader whose guidance continues to strengthen and foundation of education. Let us welcome him with a thunderous round of applause. Now, to invite our chief speaker, Sri Ishwar Chandra Nayak Sir, National Award teacher and esteemed writer, a personality who has illuminated countless lives through knowledge and literature. A warm and respectful applause, please. Mahanti ma'am, Dean cum Principal, Aryabrat Ancient Academy, an inspiring academic leader and a beacon of excellence in higher education. Let us welcome her with great admiration. With equal honor, I now invite Sri Jagdish Prithviraj Satpathy Sir, actor, filmmaker, and social activist, a creative force whose contribution to art and society is truly commendable. A huge round of applause for him. It is now my pleasure to invite Sri Pratap Kishore Mudali Sir, Secretary of Venkateshwar School, Kunad, whose dedication and commitment have been instrumental in nurturing this institution. Let us greet him with happiness.
With profound respect, I invite Sri Gunanidhi Muduli sir, founder cum chairperson of Venkateswar School, Konark, the visionary pillar behind this institution whose dream has shaped countless future. A grand applause, please. It is now my honor to invite Shri Prasad Ranjan Patra sir, Principal of Venkateswar School, Konark, the guiding force, who leads this institution with dedication and discipline. Let us welcome him wholeheartedly. Finally, I invite Shri Manas Ranjan Mudali sir, Director of Venkateswar School, Konark, a dynamic leader whose vision continues to inspire progress and excellence. Let us welcome him with a resounding applause. And blessed. Their presence on this stage is not merely ceremonial, it is inspirational. Once again, we extend our heartfelt welcome to all our Thank you, dear students, for this lovely gesture. Now, to give round of applause, please.
a token of our deep respect and affection, we have the Uttariya Samman ceremony. Let us all acknowledge this beautiful moment with a huge round of applause. Such a very lovely moment. Now, we proceed further in our program. It is time to welcome the melodious voices of our talented students. Please enjoy the welcome chorus present by the students of our institution.
शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you for that powerful and inspiring tribute to our nation. Now, I humbly invite our respected principal sir to preside over the program. Annual function ceremony of Venkateswar School Konar, and the name has been given Udan Ek Nayi Soch Ki Aur. Audience, this has got a prospectus before it. Before 3 years, we have been organizing consecutively 4 functions, and first name has been given Meri Awaaz Suno. The second has been given Meri Awaaz Suno is the first one, and the second one is that is Ankuram, and third one we are organizing, fourth one we are organizing indeed, that is Udan Ek Nayi Soch Ki Aur. This has got prospect, I will tell you later, but first of all I just welcome all the pulpited guests here over the stage on this very prosperous occasion. Now I would like to invite the chairperson of this institution to narrate the annual report of the institution. Sir, please. To one and all present here, our chief guest, honorable chief speaker, guest of honor, intellectuals, respected parents, teachers, all invited, and my near and dear students. As you approach the end of academic year, I take this opportunity to thank Almighty God Jagannath for his blessing and guidance. I also thank our parents, teachers, students, and well-wishers for their constant support. I once again heartily welcome you all to the annual day celebration of our school, Venkateswar School, Konark. This year has been very eventful for us. We have made great efforts to transform the attitude of our children and have been extremely successful in most of our endeavors. With immense pleasure, I would like to present before you a report of the activities of the school undertaken during the academic year 2025-26. There is a great saying, real education gives you more than a job. It teaches you how to live, and it cannot be measured in any tangible way. Our school is an institution runs by Utkala Charitable Trust and was established in 2007. It is the first English school in our locality. Our vision is to continue our pursuit of academic excellence as well as co-curricular activities that inspire children to reimagine the future and stand confidently in the global world. Heading academics, the Vems family consists of 28 teaching staffs, out of which 10 digit arts teachers, 5 science teachers, 13 elementary staff, along with 6 non-teaching staff and supporting staffs. The strength of our school is nearly 510 from nursery to standard 10. The school runs from 8 a.m. to 3 p.m. Sunday and second Saturdays are weekly holidays.
For evaluation of better coordination, we have arranged a teacher-parent coordination conference on the second Saturday of each month. For your kind information, the school has established its image not only in academics but has also extended its strong presence in the field of co-curricular activities. The section 2024 and 25 ended on a wonderful note, and the result of our CBSE examinations were outstanding. Our students performed very well and secured 90% and above marks in almost all subjects. Apart from academics, our students also actively participate in various competitions. Our students secure first prize in the parade organized by NSE on the occasion of Independence Day. We are fortunate to have received first prizes in essay, debate, song, drawing and other competitions which have brought our institution to a top position. Our students have also excelled in Global Olympiad and many other academics orientation programs. We are truly proud of to have such talented students in our institution. I would especially like to extend my profound gratitude to the esteemed parents. You constitute the every backbone of the institution, and your unwavering support, insightful pursuit and valuable cooperation and indispensable to our continued progress towards excellence. While we have achieved numerous milestones in our quest, many more await our pursuit. At our school, we remain resolute in our endeavor to cultivate young minds into well-rounded, self-assured, and visionary individuals. On the auspicious occasion, we reflect with immense pride and gratitude. We dedicate our achievements to our steadfast efforts and to our devoted parents and school family. Last but not least, let us solemnly reaffirm our commitment to preserve unity and propose striving collectively to transform our aspiration into reality. Thank you. Jai Jagannath, Jai Hind. Dedication cannot be counted in words. Your dedication, your inspiring words always inspire us to prepare forward. Thank you very much once again, sir. Let us move to one step ahead towards उड़ान एक नई सोच की ओर. टिके ओडिया रे कहूची पेरेंट्स मानक पे टिके कहूची प्रथमे हमर जो कंजुगेटिव चारिटा हमर फंक्शन थिला प्रथम फंक्शन ना थिला मेरी आवाज सुनो मोटे प्रोस्पेक्ट विषय रे कहि दउची. व्हेनेवर दी चाइल्ड इज इन मदर्स वूम जेतबेले पिलाटी मां पेटेरे थाए सेतबेले से कोन करथाय मेरी आवाज सुनो से बाहर को आसीबा पई सब बेले चाहूथाय. ही ऑलवेज वांट्स टू कम टू द इटर्नल अर्थ मोर्टल अर्थ. तो सही हिसाब रे हमर फास्ट फंक्शन कंजुगेटिव चारिटा फंक्शन कथा कहूची ता पूर्व कथा नुहे. सेतबेले कोन होला ना पिलाटी मदर्स वूम विथ शाउटिंग दैट मेरी आवाज सुनो, इसीलिए वो दिया गया था, एक तो नाम दिया गया था हमारा फंक्शन का. लेट अस मूव अहेड. आई विल स्पीक अनदर 3 prospect of the function later on. I am again very fortunate, we the VEMS members are very fortunate to have the honorable guest here on the pulpit. Actually beautiful audience too. Media personnel are here also recording all the instances of this particular function. उड़ान एक नई सोच की ओर. We are always watching movies, films, and we are also watching actors and actresses on the screen. We are too fortunate to get an actor here on the stage. He is an actor, he is a filmmaker and a socialist too. Now I welcome
Srijukta Jagdish Prithviraj Satpathy sir to come over the stage and speak something to the awaited audience. Sir, please. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित समस्त गुरु मानक मोर प्रणाम। मंच उपरे बा मंच तले बा साइड रे पछपटे जो कौन जगार भी गुरु माने अच्छा समस्त मोर अंतर प्रणाम। पवित्र नवरात्रि चली चैत्र नवरात्रि अवस्था माँ आराधना करा जाए पूजा करा जाए तेणुक सबु मातृशक्ति नारी शक्ति झील शक्ति जेते अच्छा समस्त को प्रणाम। ऊपर तो ये बसचंदी दीप्ति मैडम नाली शाढ़ी रे आप भारी भल मानुंट एंड नाली रेड कलर बोधे आपंकर फेवराइट। सो मुझे माँ लिंग भैरवी पूजा करे। माँ लिंग भैरवी की भितर तीन टा माँ शक्ति थाए से सब रेड रे था मोस्टली तो सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी तेणु आपण को प्रणाम। बाकी मातृशक्ति दुर्गा काली तारा विमला कमला रामचंडी जो माने भी बसचंदी माने मु आपण माने समस्ते जो माने भी ये अच्छा जी हलदी रंग अच्छा लक्ष्मी रूप में अच्छा काली को रूप में अच्छा आप जानते दुर्गा को रूप में अच्छा एंड स्माइलिंग फेसेस रे समस्त को प्रणाम। सर आपण कहते कम रे कहवाई कि हो पारे टिके टाइम आपू नेबी कहीं आपणकर भी तारीफ करार अच्छे सर। सो इन ए सिंगल लाइन जदि कहबी सो आपण मैंने एत सुंदर भाव में ऑर्गेनाइज करिसेंती द स्टार्टिंग फ्रॉम मुझे एंट्री कली द पिला माने ठिया होते विथ ब्लेजर एंड द गर्ल्स वेर थ्रोइंग द फ्लावर्स। सो इट्स ए वेरी वेरी प्लीजेंट वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अस। सो बहुत ही डिसिप्लिन सहित आप रखी पिला मानू निजर करी एंड इन ए सिंगल वर्ड आई कैन टेल यू जस्ट स्वाव यू आर। थैंक यू वेरी मच सर एंड वी बिलीव कि आपण हाथ में सब पिला मानकर भाग्य भविष्य भल चली आगू को भी भल चलो। साइड रे बसचंती गुणनिधि सार विषय गुण गाइबा मो पाखे बेसी किसी ना आपण तो तैयारी करिसेंती मंदिर अर्क क्षेत्र कोणार्क तो सूर्यंकर प्रथम किरण ओडिशा रे पड़ुची सेटा पुणी कोणार्क जोटा आमर परिचय बाहर को गले आमको कई चिन्हती आम जो कहूँ जो आम गाँ जगतसिंहपुर कई राहमा कहले किए बुझे कौटी ना कोणार्क नले पुरी पुरी कोणार्क कहले आमर परिचय। तेणु अर्क क्षेत्र भाया जगार ये मंदिर तैयारी करिसेंती एवं एते सुंदर परिवेश समस्त को दे पारिसेंती मते भी देइसेंती सेतिपई कि मु धन्यवाद जनाऊँ आपण को। एवं साइड रे बसचंती एमिनेंट राइटर ईश्वर सर आपण को बहुत बहुत प्रणाम बहुत श्रद्धा भल पाइबा आपण लेखारे जदि के पारि मो दी पद लिखिदेवे मु खुशी हेबी। एंड ताको साइड रे बसचंती जॉइंट डायरेक्टर ओसेपार विभूति सर हिमांशु सर सॉरी हिमांशु सर। सो इन ए सिंगल लाइन यू आर वेरी जेंटल सोबर एंड काइंड इट इज प्लेजर मीटिंग टू यू। एंड तांको साइड बस प्रताप मोदली मुझे श्रद्धारे बाबा बोलिकी डाके मत उत्तरी देले मुझे बाबा जिते मु जाए जिते उत्तरी जो पाए मुझे आपण पाखु दे दे आज आप मत डकई उत्तरी पिंधि ओके। सो बाबा लव यू मानस बाबू थैंक यू वेरी मच जे एते सुंदर अरेंजमेंट सबू स्कूल को मैनेज करूचंती एंड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव फुल एनर्जेटिक गॉड ब्लेस यू। सार जमती कहले ये ना जे चारिटा सेसन रे आपण आसी पहुंची सारे माने 4 वर्ष रे 4टा फिल्म से रिलीज कर देले एबे जस्ट आसिला स्क्रीन रे पछपट देखंतु आफा स्क्रीन रे आसिला आफा माने मते गोटे फिल्म मु रिलीज करिनी एबे करिबी 3 एप्रिल रे मते लागिलानी 4 वर्ष किंतु सर आपण 4 वर्ष रे 4टा फिल्म रिलीज कर सारे ओके। सो जस्ट ए शॉर्ट ब्रीफ ऑफ दिस आफा ये जो पिलाटी को आप देखुंत ये गोटे 16 वर्षर झील जी सैनिक स्कूल रे पाठ पढ़ुची एवं
असुविधा सुविधा समस्त जीवन में आसे एमती कौन असुविधा ना जोटा कि आम नुआ आगुरी है ना सृष्टि समस्त को से पैसार असुविधा हो देह खराब हो से जाऊा बेले गोटे एक्सीडेंट हो जाऊ कार बापा चली जातु कार छुआ चली जातु कौन प्रकार असुविधा भी हो समस्त सहित घटी वी आर नॉट द फर्स्ट आई बिलीव बट आम केमिति माने वीरत्वर सहित फेस करूचे सेटार कहानी एटा इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी 16 वर्षर झीर कहानी एथिरे आम देखु आफा आफा कहले आपण माने समस्ते जानीपर माने आपण समस्त सहित आम समस्त सहित जड़ित व्हाट इज आफा आफा हूँ गोटे एनर्जी जिते आखिरे किसी पड़ जाए आमर माँ माने पणत कानी रे फा करते ना नहीं करते ना सो सेटा हूँ आफा सो ये जो लेखा भी लेखाई ओडिया रे आओ इंग्लिश रे फा आपणकर एठिकार कोणार्कर ही पिला से डिजाइन कर प्रकाश तो ये जो आफा ये आफा दुईटा जिनिस कहूँ गोटे स्थूल शरीर कथा कहूबा समय गोटे सूक्ष्म आत्मार कथा भी कहूँ जेतले कि आम स्थूल शरीर दायित्व नौचे से आम सूक्ष्म आत्मार दायित्व केमिति नवा दरकार एवं स्थूल शरीर सूक्ष्म आत्मार दायित्व नेले मिराकिलटा केमिति हुए सेटा एठी आम आफारे देखैछु एवं ए झियो जी करिकी देखैछि सो आपण माने तले हॉल को आसीबे देखिबे आपण माने जानि परिबे निश्चित भाव रे सो अगेन कहिया पे बहुत किछि अछि छेनापोड़ कथा कहिया पे भूली गली बहुत सुंदर छेनापोड़ थिला खाइया को देइथिले भाई एंड ए जो झियो हमरो होस्ट करूथिले थैंक यू वेरी मच एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर हेयर माने तांकर हेयर ए जाय पड़ुछि मु गोटी गोटी की मार्क एइथि करूछि बिकॉज आई एम ए स्ट्रांग ऑब्जर्वर कहना से स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रू मु फिल्म करे आम फिल्म मेकर जोटा ये कर IDBI बैंक 10 years थी देन चाकरी छाड़देली देन वाइकम 18 कलर्स चैनल जोटा थिला तार मु क्रिएटिव हेड हिसाब से काम करूली देन से सब को भी छाड़देली देन मोर काम हूँ ऑब्जर्व करवा माने सार भितर कौन क्वालिटी अच्छी सार भितर कौन क्वालिटी अच्छी सो मु ऑब्जर्व करवा से मत आज ये लेवल रे पहुँची तेणु करके सब आपण मानक सब पिला सब पेरेंट्स को यह अनुरोध करी जे फर्स्ट ऑब्जर्व करंतु किछि कहिबा को व्यस्त होई पड़ुनी किछि करिया पई व्यस्त होई पड़ुनी समय कुआडे जीवनी समय अछि फर्स्ट लर्निंग एटीट्यूड इज द मोस्ट वाइटल एटीट्यूड मु आपन को कहिया पई चाहिबी जे मो लास्ट 2 years बिफोर जदि आपन मोर फेसबुक इंस्टा किछि चेक करिवे 2 वर्ष तळे मु फ्लूट बजेबा सिखिबा आरंभ कली मो वाइफ मते कहला जे ये बयस रे फ्लूट बजेई करी कोन करिवो कहले किछि नै शिखुची शिखिबार अच्छी मो पुओ एबे +3 फर्स्ट ईयर अच्छी अचानक दिने कहला माँ को कहला मामा मु जब चाकरी करी तुमको कौन दरकार ता मामा कहला किछि नै सैलरी हाफ मत दे दो मत पचारा कहला पापा तुमको कौन दरकार मु कहली जेबे तू चाकरी करू बाबा मु सेही समय रे जो कोर्सटा करी पाठ पढ़िया को जीवी मते 2 वर्षर पाठ पढ़ेबू तू मते कहला कौन पढ़ब मु कहली मु जानी तू जिते चाकरी करू से समय कौन नुआ कोर्स आसो मुझे पाठ पढ़ी सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जोटा मुझे कन्विन्स करने चेष्टा करुच्ची एव्रीबडी आपण मैंने जी भी बस माने भले ही 70 वर्ष हो 80 वर्ष हो 20 वर्ष हो 15 वर्ष हो झील हूँ पुओ हूँ माँ हूँ कई भी हूँ पाठ पढ़ा केवे छाड़िबे नहीं लाइफ रो 10% टाइम 24 घंटारू मात्र 10% समय आपण पाठ पढ़ा को ईच एंड एवरी डे देबे 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 जेमिति गाधौचंती खाउचंती अलग कथा करूचंती कटी मारुचंती 10% टाइम 24 घंटार आपण से देबे गीता पढ़ंतु भागवत पढ़ंतु आपण चिट्ठी पढ़ंतु चिट्ठी लिखंतु किछि भी करंतु प्लीज दिस विल हेल्प ए लॉट कहीं पिला मानू खाइले कहले हुए जिते आपण मैंने भी करेंगे ना से पिला देखिक से शिखब आ ओके करेंगे एंड 10% ऑफ योर मनी जो माने भी रोजगार करूचंती स्पेंड इन एजुकेशन निजर एजुकेशन तापर अन्य मानक देवे आगर निजे
एजुकेट हवा नुआ नुआ कथा आसूची निजुको अपडेट करवा जमती मोबाइल ऑटोमेटिक निजुको देखुच ना मोबाइल समस्त धरुचंती ऑटोमेटिक पळै आସୁची सॉफ्टवेयर अपलोड हो गला मोना नुआ सॉफ्टवेयर आसला सेमिति आमे सबु बेले रात्रि आसला माने सबुतक टेंशन छाड़ दबा एवं रिलीज करदबा बॉडी रिलीज हल्का है जो रात्रि आसला माने रात्रि चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा कोल सब किसी रिलीज करदबा एवं किछि हल्का सबुदिन टिके 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 आमे शिक्षा आहरण करिबा दैट विल हेल्प मत मु जदि करिबि मते हेल्प करिवो मो सराउंडिंग को हेल्प करिवो सोसाइटी को हेल्प करिवो एट द सेम टाइम पूरा भारत को हेल्प करिवो दिस मच आउ बेसी समय नेबिनी एंड आई एम थैंकफुल एंड आई मस्ट अप्रिशिएट गुण मोर रिक्वेस्ट रखिचंती ये आफा चलचित्र जेहेतु स्कूल पिला मानक पई कॉलेज पिला मानक पई करा जाईछि स्वतः प्रभुत्व भाव में से मत एठिक डाकिले मो कौन मोर बहुत पुराना बंधु जिते मुझे कहली मुझे चाहूँगी जे पिला माने केमिति जेहेतु ये फिल्म हॉल नहीं देखिपारे तो केमिति आसीपारे स्वतः प्रभुत्व भाव में तांकर इच्छा प्रकाश तांकर जनइले मते जे येस विल डू तो स्कूल रू मोस्टली जानी दुईटा बस कि तीन बस नहीं समस्ते आसवे डेफिनेटली आई विल वेट यू ऑल मु समस्त को आपण को अपेक्षा करी आफा पाई एंड लास्टली एंड करने पूर्व से मातृशक्ति जो आरंभ करी कथा एनर्जी आपन जो देखिए ना से आफाटा जो एनर्जीटा सेटा हूँ आजिका डेट्रे जापानीज भाषा रे कहते रेकी जमती मंडा पिठाटा को कहते मोमो चिता कुटे कहते टाटू मांडिया को कहते मिलेट सेमती आफाटा आमर हूँ रेकी आउ कि नुह सी एनर्जीटा तीन जगार आसे गोटे हूँ जंगर शिरा को बाड़ेले एनर्जी आसे आप मल्लयुद्ध कला बेले देखिथे सब जंग को बाढ़ाती युद्ध करने जो हाथ को बाड़ेले आसे आ गोटे क्लाप करले आसे सो लेट अस क्लाप फॉर सम टाइम आई विल रैप थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर percent of your money in different heads. I will also like to request all the audience over here to watch the movie show Kolapa. Again, we will just go to next step, next ladder towards Udan Ek Nayi Soch Ke Aur. I had already told you the first prospect of the first annual function, consecutive annual function. This is the second, that is Aaj Kal Aur Aaj. आज कल या माने हूँ पिला माने मुझे कहूँ जो मैंने बस ऑडियंस मैंने कि पिलाटी जो मदर उम्स रु बाहर से ही इज गेटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस मोटल वर्ल्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू व्हाट टू लर्न व्हाट नॉट टू लर्न मेनी थिंग्स आर देयर विद इन द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड व्हेनेवर ही टेक्स बाथ फ्रॉम द मदर्स womb. So in confusion he is आज कल आज this in this prospect we just organize the second function. Let us move ahead to the arena. One of the great personality over here he has already been pulpited, and I had been in touch with that great personality since 10 years. And he is a very gentle personality, a very religious person, and his words are too inspiring, dedicating, and I have never heard him speaking in louder voice. So he is none other than the secretary of this institution, Mr. Pratap Kishore Mudri sir. I would like to invite Pratap Kishore Mudri sir to come over the stage, please, to cite some lines to the awaited audience. Sir, please. जय जगन्नाथ। आज रईस आम स्कूल वार्षिक उत्सव उपस्थित सम्मानीय मुख्य अतिथि तथा जॉइंट डायरेक्टर उसेपा मिस्टर हिमांशु भूषण समर्थ जे कि जने उच्चकोटीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम रे अछंती से हला उसेपा मुख्य चीफ स्पीकर श्रीजुक्त ईश्वर चंद्र नायक जे कि एमिनेंट राइटर
and National Award teacher, and Dr. Diptimay Mahanti, Dean cum Principal, Aryabhatta Ancient Academy, और मोर छोट साना भाई कहले चले मिस्टर जगदीश पित्रा सतपथी जे के एक्टर एंड फिल्म मेकर। मोर साना भाई आपण मैंने जानते जे होचंती फाउंडेशन संस्थार फाउंडर एंड चेयरमैन गुणनिधि मुदुली। आपण मैंने जानते सी आपनकर गुण सर आ मोर सम्मुखर उपस्थित समस्त अभिभावक अभिभावक वृंद आपण मानको यही प्रोग्राम रे आपण मानको मोर हार्दिक माने शुभकामना हार्दिक शुभेच्छा। मीडिया उपस्थित मोर मीडिया भाई माने आ समस्त मोर सदस्य छात्र छात्री बंद एक्चुअली आज फंक्शन होची हमर छोट छोट कोनी कोनी पिला मानकर आपण जानि परथि मु बोधे केबे फंक्शन अटेंड करेनि एटा सत्य कथा मोर एटा फर्स्ट टाइम मु आज स्पीकर धरछि आपन सामने रे मोर सानो भाई जको मते ए दिन मिली आज जे मु आपन सामने किछि कहया को आछि मु एक्चुअली स्पिरिचुअल प्रसाद सर कहले हमरो जे कि प्रिंसिपल जे मु स्पिरिचुअली निश्चय किंतु मोर स्पिरिचुअल स्पीच सेमति किछि आसेनि आपन मन पाखु समय सुविधा आसले मु मध्ये आपन मन स्पिरिचुअल किछि दिन आपन सुनेबी। आज प्रोग्राम बेसिकली हूँ आम छात्र कोनी कोनी छात्र छात्री मानकर समय नष्ट करने मुझे चाहेनी कारण आपने कोनी कोनी छात्र ही देशर भविष्य यार भीतर ही आप देखिए बहुत एमिनेंट पर्सनालीटी आपन को फ्यूचर में मिले तेणुक से मोर समस्त अभिभावक मानक मोर अनुरोध जे आपण आटलिस्ट आपण पिला भीतर थिबा सही प्रतिभा को चिन्हतु चिन्हला पर स्कूल अध्यक्ष स्कूल अध्यापिका ये मैंने सतर आप कोऑर्डिनेशन रखी से प्रतिभा को केमती आगू को आपण मैंने नहीं पारे पिलार फ्यूचर केमती आगू बढ़ी पार से समस्ते उभय आम ऑर्गेनाइजेशन आम स्कूल आपण मान तत्वावधान में पिलांकर प्रतिभा कहीं परीक्षी भल मनीष कर यहाँ मोर आपण मान अनुरोध। शेष में मुझे किसी कहवाई चाहूनी आपण मानक मो पिला मानकर उन्नति पाई प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करी आपण मानक पाखर विदाय नौजी। जय हिंद जय जगन्नाथ। To dedicating that touched each and every heart of these persons present over here. Actually, the immense notification which I observe is a triangle, tribhuja. At one point, the student is there, another point, the school is there, and the last point, that is the parents. So, the sum of these 3 points makes an angle. That means, if a student wants to prosper in his life, he has to touch these 3 points. That is what I think Mudri sir wanted to speak all of the audience present here, over here. It is very sad to say that one of our guests on the way, he met an accident. But I am very grateful to that personality. In spite of all these odd events, she is here. And obviously, I will give all the credits to KM sir. He is at the seat with you. I would like to request KM sir, please stand up. For whom madam is here. For madam is here. This is KM sir, for whom madam is here. Thank you very much, sir. Actually, I heard many things about madam. He is now Dean cum Principal of Ancient Aryabhatta Academy. I would like to now request that personality, Dr. Diptimay Mahanti ma'am, to come over the stage to cite some lines to the awaited students and audience. Ma'am, please. Good evening, wonderful audience. All the adorable, esteemed guests on the dais, and very energetic and handsome principal of the school, all my dear colleagues, students,
and loving parents. Actually, while I was coming from Khordha, I met with an accident. There is the series of 4 cars met with an accident, and with the blessings of Almighty, I reached here safe. So I am thankful to Almighty and grateful to Almighty that nothing has mishappened to me. Actually, I don't know for what reason sir has invited me as the guest. Actually, I am nothing, but I am the leader of my team. So though it is the annual function of the students, I must tell something for the benefits of the students and parents over here, that what to do and what not to do. Because always teachers are orator. Teachers, whenever they are getting opportunity, they never hesitate to speak out. So this is the golden opportunity I am getting over here with due permission and request of principal, that I am telling you, dear students, if you are hearing me in and around the campus, because I know that this is your annual function, I don't want to kill your much time. Students, if you are hearing me, you remember some points I am telling you. First of all, time management you learn, because you know that time and tide, once passes, then never comes. So dear students, you count from now that your future is created by what you are doing today, not exactly what you will do tomorrow. So students, you try to know that skill and the art, how to manage your time by segregating your time with personal life and your study, academic or the career. If you are able to know from right now, then nobody can stop you to achieve your goal. Then the second major thing, I must say, the digital responsibilities. Dear students and parents, this is my immense request from my core of heart, that during the COVID-19, the digital platform has taught us many good things, simultaneously many bad things. So dear students, if you will use technology as a tool of learning, not as the distraction, then you can get the benefit out of it. Nowadays, after COVID-19, it is very immensely marked everywhere. There is the mental stress and balance. So here, I know that sometimes mental imbalances will come. Mental stress is there, but don't ignore that. You address that, and if possible, if needed, you can talk to the professionals. Because this should not be neglected, this should not be ignored. Rather, it should be addressed at the right time to save the golden life of the students. Next thing, I must say, the discipline and consistency of your life, definitely build yourself to reach your target, to reach your goal. Because you know that discipline doesn't mean that it is the strictness. Rather, it is called the organization. It is called the systematic plan of your life and systematic execution of the plan, so that you can achieve anything in your life. And if you will continue with, if consistently you can do, then definitely you will reach your target. Then the next point I must say, the role of the failure. Everything we are not achieving in our life, because there is the English proverb that man purposes, God disposes. Suppose, dear parents, whenever your children are participating in different competitions, they are participating in different exams and not coming with the target result, please try to celebrate their failure, because the each failure can teach many things which success never can do. So, as we know again, there is the English proverb that failures are the pillar of success. And one more thing I should say, if your that means students and parents are listening, very, very minutically I should say that you have your vital role for the society, that you should have to. Being the educated individual, you should impart your education. You can use your education for the renaissance in society, to bring changes in this society, because you are the future generation of the society. We are waiting. What miracle you are bringing to the society? What changes you are bringing to the society? What
positive renasa you are bringing to the society. Then one more thing, always show your gratitude towards your parents, towards the elders, towards your teachers, towards yourself, because you have to acknowledge yourself. You have to trust yourself. You have to believe yourself that God has given all sorts of potentiality in you. You need to excel, explore, and finally you can go for getting that. And students, last but not the least, I must say, you dream high with the purpose and continuously work on that till your purpose is not reached, purpose is not achieved, purpose is not targeted. So students, with many expectations, with this very, very important day, I don't want to waste your time, because parents, teachers, those who are working at the background too, that means with patience and with their mentoring and guidance, the students' cultural program will be staged on the stage. I don't want to take your own, that means much time, but I can wish that you will justify the theme of your annual function, that suffers उड़ान की उड़ान है एक नई सोच पर. So I am really thankful and grateful to the principal and the director, chairperson, and all the guests present over here. And dear parents, your role is very vital to shape your child, because we the teachers can show the road map, but you are the everything for child. So dear parents, clap for yourself. Thank you. Are so inspiring. Your words are so dedicating. I think it must have touched the core of all hearts. Actually, the main point of your speech for the students is actually not to use the mobile otherwise. You have to use your mobile phones, your medias in productive way. You don't have to use it in otherwise, which will destroy your mental ability. Actually, if one person uses a mobile for a long period of time, the power of thinking gradually deteriorates. That happens. So, I think with the words of Ma'am Diptimayi, you should always try to adopt the words of Ma'am, and likewise you have to proceed in your life. The personality, the person speaks about personality. The personality fetches a person in the stage. The personality creates a picture on the society. The personality sketches the character of a person. I would like to speak one thing about that personality who has been already pulpited on the stage, our chief speaker, sir. I had an opportunity, I have many opportunities to share the stage with sir earlier, but I am too fortunate to get him over here on the annual function of my institution especially. So I would like to, actually another identification is there of sir. He is a lecturer, he is a teacher in chemistry, very good teacher in chemistry. I had heard his lectures, I had just came to know earlier about him, and I am too fortunate, again I am too fortunate to have him here on this particular stage. So I would like to request our chief speaker, sir. He has been also awarded by our president, Mrs. Draupadi Murmu, and I would like to request Srijukta Ishwar Chandra Nayak sir to come over the stage and cite some beautiful lines to the awaited students and audience. Sir, please. Jagannath, respected President of the 18th annual function is being celebrated by the Venkateshwar Public School. All the respected audiences, parents, respected chief guest, Joint Director Osepa. He is a man without ego, and his specialty is finding positivity in every negative situation. That is his specialty. And Dr. Dipti Mahanti spoke beautiful lines for the students, and
actor and film producer, director. Sir, I thank you very much for your very good presentation before the audiences. And Mudali sir, respected principal sir, and my classmate friend, the chairperson of the school, Gunanidhi sir, and the media persons and my dear students. I will conclude my dialogue with a story behind the famous photograph of the world history. Because all the parents are here, madam told to the students and director sir told to all the audiences, but my focus is to the parents who are sitting here, because all the students are busy to perform their dances and they will show what they have learned throughout the year to you. And you are also very much eagerly waiting for their performances, but I will conclude within 5 minutes. And I think if I will tell in Odia, that will very much touch you. 1992 ମସିହାର କଥା, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏ ଫେମିନ୍। ଯେମିତି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା 1867 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ, ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି କେହି। ଏମିତି ସମୟ ଆସେ, ମା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ପଛାଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳରେ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ, ୟୁନେସ୍କୋ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗଣା ସେଲ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ନ ମରିବେ, ତେଣୁ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ ବୟସ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, ତାର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଆସନ୍ନ, ହି ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନିୟର ଟୁ ଡାଏ। ସେ ଯାଉଛି ସେଇ ସେଲ୍ଟରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଯାଉଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଚାଲି ପାରୁନି, ବିକଜ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଅର୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନର୍ଜି ଟୁ ମୁଭ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସେଲ୍ଟର। ସେଇ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହେଇଛି, ତା ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଶାଗୁଣା ତା ପାଖେ ପାଖେ ଚାଲୁଛି, ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଶାଗୁଣା ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ତା ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଦେବି। କାରଣ ଭୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ଶାଗୁଣା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ କେବେ ମିଳିବନି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ତା ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବି। এইভাবে সিচুয়েশনরে জনে থাকি ফটো জর্নালিস্ট কেভিন ক্যাটর। হি ওয়াজ ফ্রম দ সাউথ আফ্রিকা। সে যাই থাকি সেটি କରାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଫଟୋ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣେଇବେ ହାଉ ଦ ଫେମିନ୍ ହାଜ୍ ଆଟାକ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ସ ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ। ସେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ସେ ଫଟୋଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋଟି ଟାଇମ୍ସ ଜର୍ନାଲ ଟାଇମ୍ସ ମାଗାଜିନ୍ରେ ଛପେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ 1994 ମସିହାରେ ଆଣ୍ଡ ବିକେମ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ପୋଲଜିର ଆୱାର୍ଡ଼, ଆମେରିକାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି କେଭିନ୍ କ୍ୟାଟରକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟେ। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ମୋତେ 32 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 32 ବର୍ଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଗଲେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ଆଇ ହାଭ୍ collected the photo which creates, which resounds every minds of the people of the world. किंतु यही समय कौन है जितेबाला से आसी जड़े जर्नालीस्ट पचारि सर कैन यू टेल मी यू आर नाउ ए फेमस पर्सनालिटी ऑल ऑफ द वर्ल्ड आज ए फोटो जर्नालीस्ट कि आप मत कहींपारे जितेबाला आप फोटो उठाते व्हाट वाज योर रियल ड्यूटी आज ए ह्यूमान गोटे मनीष हिसाब से गोटे मानव हिसाब से आपणकर से कर्तव्य कौन थिला फोटो उठेबा ना आउ किछ थिला। He was just confused at this question. प्रकृति उत्तर कौन हम अरे गोटे पिला को सागुना खाइबा को जाउची, he is going to die। हेले ताकू सेठी रक्षा करबा परवर्ती आपण फोटो उठुथिले से एई कथा भाबिले एई आत्मग्लानि रे से मात्र 3 मास परे से चालिले जोठी की से तांकर प्राइमरी एजुकेशन he was started
जोड़ी तांकर प्राथमिक शिक्षा नहीं से स्कूल बाउंड्री की गले सेठी बसिले गोटे ट्रकर जोठी ड्राइवर बसे बसिले ट्रकर से ड्राइवर सब द्वारा दे दे ट्रकर जो होस पाइप रे धुआं बाहर से धुआं को आनी तार छाड़िले कंबरे एंड ही सकम टू डेथ बाय द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑफ दैट ट्रक। मु ए गल्पटर अवधारणा कर उद्देश्य समस्त पेरेंट्स बसी मनीषर मन को मनीषर आत्मा को इट इज इंग्लिश मीडियम और ओडिया मीडियम जहाँ भी स्कूल होना कहीं जदि प्राथमिक शिक्षा पिला मन में मानवीय मूल्यबोध आपण गुंथार असमर्थ हुंती ताले दैट एजुकेशन डज नॉट हैव एनी वैल्यू। आज समाज रे जो विशृंखला सेपटे युद्ध चली घरे घरे सबुदिन युद्ध चली आज पिला पाठ पढ़ी चाकरी कला आईएएस हो ओएस हो इंजीनियर डाक्तर हो से ता बापा माँ को नहीं वृद्धाश्रम छाड़ुची बिकज ड्यू टू लैक ऑफ दैट वैल्यूज। जदि आप शिक्षा रे मूल्यबोध गुंथि न पारती ताहले शिक्षा किछि मूल्यवान नुहे। आप आज जो स्वप्न देखुं मो पु काली बड़ मनीष करी डाक्तर करी इंजीनियर करी धीरे धीरे आपन को जितेबले बयसर अपन्नारे आपन देखा नजिब आपन कई नथिबे आपन कहबे आई वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ दिस वर्ल्ड मो सबुठु बोका बोधे थिली। आउ सबुठी मैडम भी कहते सार भी कहते माँ शक्ति बा आपण मैंने देखिए जब समाज को बदल जड़े किए सुदक्ष बिंधाणी थाए सी इज द मदर। कारण शिक्षा आरंभ हुए 5 मास 19 दिन जो दिन पिला को हुए माँ पेटे से दिन टू एजुकेशन स्टार्ट्स बिकज ऑल द 5 सेंसेस स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम दैट डे। से दिन टू पिला शुणे जहाँ भी शुणे आम पढ़ी अभिमन्यु कथा महाभारत रे। तेणु माँ जदि चाहे समग्र समाज को बदल दे पार कारण पिला मन से गुंथि पार परिवार रे तार आचरण उच्चारण व्यवहार चालीचलन समाज रे कौन करवा दरकार स्कूल रे कौन पढ़ी केमी पाठ पढ़ा जाऊँगी खाली पाठ नुह। आपण मैंने जब भल भाव आनालिसिस करें देखिए बहुत भल अधिका नंबर रखि भल पाठ पढ़ुवा जे भल चाकरी कर बहुत ना रखा दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल मे बी पॉसिबल टू सम एक्सटेंट किंतु सबुठी सत्य नुह। आउ बहुत कम रखुवा पिला जे भल पिला हेनी समाज रे ना रखिबनी दैट इज ऑल्सो द मिस्टेक यू आर थिंकिंग। गांधीजी थिले जेते बड़ महापुरुष पृथ्वी रही आप देखिए समस्ते भल पिला नते बहुत भल पाठ पढ़ुनते पाठ पढ़ा दरकार किंतु बहुत भल नंबर रखी सब आगे रहा दरकार सब बेले पिला को मुझे आई विल मेक ए मशीन इट इज रॉन्ग। आज ए पेरेंट्स ताको गोटे भल मनीष आम तैयारी करवा ता भितर जो गुणर आवश्यक जो मानवीय मूल्यबोध मुझे भाव गुंथेबी से जोटी जाऊना कहीं जो विदेश में रोना कहीं ता मन सब बेले द ओब्लिगेशंस टुवर्ड्स द ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स। बापा माँ मो कौन करते समाज मो कौन करता ये देश माई मो कौन करता आई हैव टू व्हाट आई हैव टू कंट्रीब्यूट रीपे व्हाट आई हैव earned from them what I have got from them that is the sole essential of education at this present context। तेणु आम समस्ते आपण मैंने जिते बसते आम इंग्लीश मीडियम पढ़ाऊे ओडिया मीडियम जो पढ़ाऊे आम समस्त बर्तमान प्रथम कर्तव्य केवल पाठ नुह पाठ सांगे आप साठ भी कहीपर किंतु ता मध्य आप समस्ते भर्ती करते पिला भितर जो मानवीय मूल्यबोध से पिलाटी केमी बड़ हेले केवल निजे नुहे आपण को खुशी दो आपण परिवार को खुशी दो आपण चतुर्पार्श्व को खुशी दो एवं समाज को खुशी दो समग्र देश में खुशी रहो। आपण मैंने चिंता कले जो खामने की मारले तांको बयस 79 आम कहे यंग मैंने बहुत बर्तमान कौन होती ना दुर्दशा खराब काम कर 79 आउ नित्यानंद को 79 सेपटे ट्रम्प को बोधे 89 माने बुढ़ा बुढ़ा भितर लड़े कर लक्ष लक्ष कोटि कोटि लोक मरी जाउछंती समस्ते दुर्भिक्षाड़ी कहले पड़ौछंती ताले कहीं केमिति होछ भाई। तेणु आमको बर्तमान सजग होगा पड़ो पिला मानक आमको सेमती गढ़ा पड़ो तांको भितर से भावना से इमोशन से भैल्यू से नैतिकता आम तांको भितर से भाव गुंथवा पड़ो जहाँफल आज आम जो एजुकेशन कथा कहे पिला मानक पढ़े बड़ मनीष करवा ताहले से दिन सफल हम। समय हो गलानी आज दिन भाषण नुह पिला माने दे आर वेटिंग ईगरली टू परफॉर्म देयर डांसेस एंड एवरी आर्ट्स दे विल शो टू देयर पेरेंट्स। बापा बहु देखिए जे प्रकृति मो पिला केते कोन करिछि। तेणु आपन को अशेष धन्यवाद समस्ते धैर्य सहकार मोर दुई कथा शुणिले आ मोर सांग प्रिंसिपाल चेयरमैन आ पूर्ण भाई प्रिंसिपाल सर तांको मध्य अशेष धन्यवाद आ गुण बाबू मोर क्लासमेट फ्रेंड तांको मध्य अशेष धन्यवाद समस्त को आउ थे धन्यवाद दे मोर बाणी के विराम दउची। जय जगन्नाथ। थैंक यू। Last but not the least, I would like to invite a personality who is not only an eminent personality in the field of education, rather he is a very good human being, a very sober person
And I have already listened many things about sir. And actually mu jette lokonku sir ko bisare kahi sir amo school ku jauchundi guest eikri, all the persons they just give positive lines towards sir. So now I will now invite the attraction of this particular function Udan Ek Nai Soch Ki Aur, our chief guest sir Shrijukta Himanshu Bhushan Samat sir, Joint Director OSEPA. Sir, I would like to request you to cite some lines to the awaited student parents, sir. जय जगन्नाथ समस्तों को नमस्कार समस्ते सोई पड़े ना कौन सोई ना समस्तों को नमस्कार थैंक यू मंचासीन समस्त अतिथि तथा आमर यही विद्यालय जे प्रधान शिक्षक बा प्रिंसिपल आमर सभापति वेंकटेश्वर स्कूल एनुअल फंक्शन 18th एनुअल फंक्शन आमर ईश्वर सर आमर दीप्ति मैम एवं आमर जे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अच्छा सतपति सर एवं आमर चेयरपर्सन भी अच्छा समस्त को एवं सामने बसी समस्त इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स एवं मीडिया बंधुगण एक्चुअली यही प्रोग्राम रे आसीबा पई एते सुंदर परिवेश होईची जेतेबेले आमे एंट्री कलु भी से समय एते डिसिप्लिन रे पिला माने छिड़ा ही थांती एवं फूल पकौ थांती आम मानक ऊपर तो से डिसिप्लिन रु आमे आरंभ करिकी वर्तमान पर्यंत आसीचु एवं साधारणतः फंक्शन हेले मु पूरा संपूर्ण ओडिया रे कहबी हैला समस्ते बुझीबा तो आमर नॉर्मल स्कूल मानक कौन हुए ना बहुत पाटितुंड हुए तो बेसी समय नेबिनी किंतु ये मुझे देखिली गोटे डिफरेंट जिनस जे समस्ते बहुत डिसिप्लिन रे अछंती एवं से आसवा भितर एबे आपण माने जानूथिबे जे मु एक्चुअली कौन मु कहबी मु चिंता करि पार नथिली किंतु मने मने भाबुची मते जो जिनसटा दुख दउची सेटा मु निश्चित भाव में 500,000 लोक अछंती से भितर जदि 100 जन भी शुणिकी ताकू काम रे लगेइबे ताले मु भाबुची मु आसीबार किछिटा सार्थकता रहिबो। तो प्रथम इश्यू रहिला एबे सबु माँ माने कहि परिबे एवं बापा माने भी कहि परिबे घरे वर्तमान चुली केमती जळिबो कि नहीं चुली जळिबा पई कोन दरकार अछि वर्तमान कौन दरकार होची गैस हाँ ना नहीं गैस समस्त घरे अच्छी कि किए लगी पड़ी पुणी डबल गैस करूथिबो कि आउ का ना अप्लाई करूथिबो एमती विभिन्न जिनस पाला चली कि नहीं यही सब कारण कौन पई होची आपण माने जदि समस्ते न्यूज देखुथिबे ताहले जानि पारुथिबे जस्ट किछि समय पूर्व ईश्वर सर कहि आसुथिले से जिनस जे वर्तमान वार चली देश देश भितर फाइट चली मिसाइल पड़ुची विभिन्न प्रकार इश्यू होची आम देशर से कौन सी भी भाग नहीं किंतु आम उपरे वर्तमान चाप पड़ा स्टार्ट है तो आमे माने वर्तमान यही फंक्शन माध्यम मुझा कहवाई चाहिए जे जो छोट छोट पिला माने अछंती जो माने कि आमर भविष्य को आग को लेकिन जीवे जो भविष्य से आगे रही से पिला माने केमिति आगामी दिन में भलरे बंचिबे पिला मानक भितरे आमे गोटे एमिति वातावरण सृष्टि करिबा जे पिला माने जेमति आगामी दिन में शांतिर दूत हो पारिबे से माने शांति सारा विश्व रे से माने स्प्रेड करि पारिबे से बलिया किछि सिचुएशन हमको क्रिएट करिया पई पड़िबो। तो मु एठी कहबा पई चाहूची जे इवेन देखंतु आजिकल अपराध एते मात्रा रे बढ़ी चली आजिकल जुवेनाइल बोर्ड आसी पिला मानकर पई स्वतंत्र कारागार आसी जो पिला माने कि आगामी दिन में आमर देश गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करेंगे किंतु पिला मानक पई सेपरेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रही विभिन्न कारागार रही तो मु
एतिके मु भाबुची जो दिन ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उठीजिव आ दुनिया रे नथिबो सेतेबेले आगामी भविष्य निश्चित भाव में गोटे सुंदर परिवेश सृष्टि नहीं कि आसीबो एवं आमे आम पिला मानक जो माने आमे देखुची कि आगामी दिन में से माने भलरे बंचिबे बोली से माने निश्चित भाव में भलरे बंचिबार गोटे परिवेशटी पाई परिबे। एवं सेकेंड इश्यू एबे वर्तमान मात्र मार्च मास स्टार्ट होईची फेब्रुआरी मास जनवरी मास शेष आड़ू आपण माने परिवेश परिवर्तनटा आपण माने फील करि पारिथिबे। आम देश रे किंबा अलगा कंट्री भी आपण देखंतु जेते मात्रा रे कंस्ट्रक्शन काम चलीची सेही मात्रा रे हमर प्लांटेशनटा हमर चली नाही। आमे जेतिकी कंस्ट्रक्शन करूचे आमे ताठारु अधिक प्लांटेशन करवा दरकार अछि। एवं जो पिला माने आपण माने एई स्कूल रे पढुचंती एवं बापा माँ माने अछंती आपण माने तांकर भविष्य गठन करने वेंकटेश्वर स्कूल को पठेइचंती एवं वेंकटेश्वर स्कूल जो मैंने वेंकटेश्वर स्कूल जी कर्मकर्ता अच्छा मुझे रिक्वेस्ट करी जे पिला मानक भितरे गोटे शांतिर वातावरण टिके सृष्टि करंतु जेमती पिला माने तांकर स्कूल बाहर गला परे भी से माने तांकर परिवेश रे तांकर गाँ रे तांकर सांग साथी भितरे से सेमती शांतिर प्रतीक होइकी रहिबे। एवं जोटी भी जाउछंती एवं आमे जतेबेले माने एई रास्ता रे कोणार्क एवं निमापड़ा मझिरे आमे जतेबेले आसुचु आपण देखुथिबे दी साइड रे बढ़िया सुंदर प्लांटेशन हेइची। जदि एमती प्लांटेशन सबु जगह रे हुए ताहले निश्चित भाव में किछि मात्रा रे आमे जो एसी लगाउचे एसी लगैले सारा पृथ्वी केबे भी ठंडा रहिबो नाही। केवल गछ ही जी कि आमको अम्लजान सहित परिवेशटा को भी सुस्थ रखिबो। ये केवल मोर दुईटा संदेश एवं गोटे बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन मोर थिला सार जेमती कहूथिले ऑब्जर्वेशन तांकर गोटे बहुत बढ़िया स्किल एवं मते भी भल लगे जेतेबेले इंग्लिश मीडियम स्कूल रे समस्त इंग्लिश रे स्पीच दउचंती एवं फाउंडर भी माने इंग्लिश रे कहउचंती देन सेठी मोटे बहुत भल जिनस लागिला जेतेबेले समस्त को से प्रेजेंटेशन दउथिले मोहम्मद भगवत गीतांकर गोटे प्रेजेंटेशन से देले ते इंग्लिश मीडियम हो पछे से गोटे सुंदर माने उपहारटी देइचंती सेति बहुत बहुत धन्यवाद। एवं जेतेबेले भी आमे आइदर इंग्लिश मीडियम स्कूल एनी फॉरेन लैंग्वेज आमे यूज करू जहाँ भी हो किंतु मन सब बेले ओडिया ही थिबो कि नहीं। धन्यवाद समस्त को मत इनवाइट करथिबारु एवं दीटा जिनस निहाती टिके मने रखिबे एटा आपण मान को हुए तो एई प्रोग्राम रे फ्रूटफुल हेई न पारे किंतु एटा लाइफ रे निहाती दरकार। थैंक यू। Thank you very much, sir. Your words will be remembered by all of our students. Your words will be remembered by, I would like to request our parents to actually go with the words of the sir, and I will ask my teachers also, they should inspire, they should speak these lines to their students, how they would promote in their life. The session of speech has ended. Now we will move to another ladder, a step forward, that is a prize distribution session. I would like to request all of the purported guests to come over the stage, please, to just give award to the students. It will take only 5 to 7 minutes, then we will start our cultural program thereafter. Ma'am has got some work, so she is now going to leave the stage. Many, many thanks to ma'am. Now let us move to the arena of singing of standard 7, Smruti Pragya Dalai of standard 8, and Sampriti Satpati of standard 8, standard 9. Standard 9. Now the honorable guest will just afford the prize for their academic dignities. I would like to request the audience to applaud on this occasion. Please clap your hand because these small kids have tried a lot to be at the top of their classes. They are being awarded. They are being awarded by the pulpited guest over here. We are too fortunate to find these
kinds of guests on this annual function Udan Ek Nayi Soch Ke Aur. Thank you very much, student. Thank you very much, student. You can just move down the stair. Again, I would like to request this CBSE Bansali Mahanti. Requested to cite some lines to the audience. Bansali Mahanti. After receiving the prize, I would like that Bansali man should speak something to the audience. Nobody. And my dear teachers, I am here today just because of my dear teachers and my friends who guide me, the teachers who taught me everything. This prize is dedicated to them, and where I am today, it's all because of them. I wouldn't have been here because if they are not here in my life. I have spent 13 years in this school, and it feels nostalgic to come here today and to share the stage with all of the authorities, and I feel like I'm back to the family. And I just want to share all my love to all the teachers and everyone here. Thank you. महोदय आम मुख्य अतिथि ठार मानपत्र ग्रहण करने इच्छा प्रकाश करुँ स्वाति मैम ये कार्य परिचालन करें Esteemed sir, you have been an inspiration to vast number of students, teachers and youth of this institution as well as the state, and always motivated them for the sacrifice towards mother and motherland for the betterment of Salvation Venkateshwar School. In recognition of your hard work, thoughtfulness, creativity and caring nature are admirable as ages to come, and our appreciation for you has been officially acknowledged as a positive view experience. Thank you so much, sir. Pradhan. Sohan Kumar Pradhan will be awarded now. Athletic champion. He has got first prize in 3 of the events. Very good, well done. Thank you very much, Sohan. Class 8 students, they were at the final, and obviously, thank you very much, class 8 students. On behalf of the 18th annual function 2025-26 Udan Ek Nayi Soch Ke Aur, organized by BHEMS Konark, I would like to give my heartfelt thanks to our distinguished esteemed guest. A heap of thanks to our honorable parents whose helping hand and presence has made of this evening an elegant one. Thanks to the faculty of this institution for their hard labor. I would like to extend my vote of thanks to music director, dance teachers, musicians, sound and light personnel. I pay my thanks to the media personnel on behalf of the institution. At last but not at least, I would like to pay thanks to our students for their sincerity and dedication. Thanks to all. Jai Jagannath. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. The teachers who taught me everything. This
This prize is dedicated to them, and where I am today, it's all because of them. I wouldn't have been here because, if they are not Yearman Rice. I have spent 13 years in this school, and it feels nostalgic to Fool come here myself today. to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be.